let me know when you can see my screen. Let me know guys when you can see my screen. Guys, can you see my screen? Yes, ma'am. But it's It was moving, right? Because I was moving. yeah, yes. Any one of you have studied management before? किसी ने पढ़ा है पहले मैनेजमेंट सब्जेक्ट कहीं पर भी? नहीं मैम, ऐसे नहीं पढ़ा। कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है। ओके, सो दिस इज न्यू फॉर यू ऑल, ठीक है। बट गाइस, इसको ना, इस सब्जेक्ट को बिल्कुल आपने यू शुड स्टडी एज अ बेस। रीजन बीइंग, ये आपके हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, प्रोफेशनल, पर्सनल, सब जगह पर यूज होने वाला है, ठीक है। ओके, सो मैनेजमेंट, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या होता है मैनेजमेंट? व्हाट इज मैनेजमेंट? मैम, मैनेजमेंट एक तरीका होता है कि जैसे कोई भी वर्क को करने के एक सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना। स्टेप 1 को, जो स्टेप 3 को स्टेप 1 ना कर दें। ऐसे मैम जो सेट ऑफ रूल्स है, जो काम करने का तरीका है, ऐसे पहले जो भी है मैम, जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे काम होता है, तो वो प्रॉपर्ली फॉलो हो, वो उसको मैनेजमेंट कहते हैं। Very nice, very nice. So basically what he's trying to say is that you have a very defined way and defined objectives which you want to achieve through your management, right? कि management basically क्या है? Management आपका एक, जो भी आपका defined काम है, defined goal है, उसको achieve करना आपके अपने बैलेंस स्टेप से, डिफाइंड स्टेप से, और उनको फिर आगे मेजर करना कि भाई हमारा जो काम है हमने वो सही से करा या नहीं करा। अब यहाँ पर जब हम काम की बात करते हैं, when we talk about management, when we talk about work, here it's not about only how you are delivering, it's also about how the people who are associated with your work or who are associated with the goal are performing, right? लोग कैसे कर रहे हैं, मीन्स अब आज की डेट में हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का मतलब ये है, अगर हम आप हॉस्पिटल्स में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या करते हैं? मैनेजमेंट ऑलवेज गेट द वर्क डन बाय द पीपल। आई मीन, सो अभी क्या क्या बात निकल के आ रही है कि एक तो हमारा काम डिफाइन होना चाहिए, उसको मीट आउट करने का तरीका, और यहाँ पर लोगों से कराने का तरीका। सो मैनेजमेंट इज बेसिकली एन आर्ट of getting things done through and within the people in formally organized groups. ये हमारे को ऊंट्स ने भी ये डेफिनेशन दी है, देखो जो मैंने the one which I have highlighted. So management is an art of getting things done through and within the people in formally organized groups. It is an art of creating an environment in which people can perform and individuals can cooperate towards attainment of group goals. Means लोगों से काम करवाना है, getting work done from people and creating an environment wherein people should feel motivated. It's not wherein you will always have a stick in your hand and you will run behind people कि काम करो काम करो काम करो। नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट उसी तरीके से बनाना जहां पर लोग खुद मोटिवेटेड हो, खुद ड्रिवन हो, सेल्फ ड्रिवन हो काम को करने के लिए और अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। अब जहां हम बात कर रहे हैं सेल्फ ड्रिवन हो, कैसे होंगे सेल्फ ड्रिवन लोग? आप कैसे करोगे लोगों को मोटिवेट?
या लोग खुद काम कैसे करेंगे? अब आपके पास like for example you have an organization wherein you have 5,000 people. Will you be running after everyone to get the work done? Yes or no? No, ma'am. How will you manage? मैम To set ग्रुप्स the aim for people. Sorry, set the To aim for people. Okay, very good. मैम ग्रुप्स बना देंगे स्मॉल, देन उनके एक रिप्रेजेंटेटिव Very बना देंगे nice. टू टू डू द स्पेसिफिक वर्क। ऐसे करके मैम फिर उनके ऊपर बनाएंगे, देन कलेक्टिवली काम की वो देखेंगे मैम ग्रोथ कितनी हो रही है। अब आपने फॉर एग्जांपल एक ग्रुप बनाया जिसमें यू हैव 20 पीपल, आपने एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया उसका, पर क्या रिप्रेजेंटेटिव भी उन 20 पीपल के पीछे पीछे भागेगा? Think. You are creating an environment. Means what? How are you going to motivate people? Maria, question to you. Actually, for each person in the group, should Mhm. be their own aim. Okay. We should means we have to separate the aims between among the groups, whatever their position were. Okay. Hello. Yeah. Anything else anybody would Hello. like to say? Yeah. I can hear you, Maria. Okay. Maria, I can hear you. You're audible. Thank you. Mhm. Anybody else would like to add to this? हमने representative बना लिए, we identify people who would be coordinating and managing the group. Apart from that, And for managing the human resource are very important. It is for targeting the goal, because without the in the managing of this all, we have included this materials. The required materials are also important. Okay. Okay. Now listen what I'm saying. Okay. We're trying to create environment by fixing the jobs, fixing the responsibility, fixing the accountability. Let's say 20 people are there in one group and there is one representative who would be managing that group. Now, even group members also needs to have the clear-cut roles and responsibilities कि किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो अगर already उनके पास defined होगा, तो duplicacy of work नहीं होगा, आपस में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, there would not be any chaos in between the groups. Correct? So, and you would also have a clear-cut reward and recognition system. Like, for example, if anybody knows that, I would be, for example, doing this particular work today, I would get so and so reward. I would get so and so incentive. So that means you are not going individually to an individual person saying that आप ये करोगे तो ये मिलेगा, नहीं. आपके पॉलिसीज, आपके प्रोसीजर्स, आपके रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन सिस्टम्स, आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स, अब आपके आपके ट्रांसफर्स, आपके प्रमोशंस पहले से ही इस तरह से डिफाइन होंगे wherein people would be motivated enough to perform and they will have a very clear picture of the goals, like they have to do this and if they would be delivering this they will get this. So
and if they would not deliver this, or if they would not do this, they will be getting this. That means they will be getting the demotion, or maybe their performance would not be up to the mark. They may also there may also be a chance of losing a job. So that means you are automatically creating an environment in such a way that people themselves could be self-driven to perform their task. ठीक है, आप उनके पीछे पीछे नहीं जा रहे, आपके एनवायरनमेंट में, यानी कि आपके, अब आप एक बात बताओ, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर क्या हर बात के लिए ट्रेनिंग, मतलब जा जाके बताना पड़ता है कि आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना है? नहीं, उनके ट्रेनिंग्स में ही, स्टार्टिंग में, ओरिएंटेशन लेक्चर्स में ही उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी जॉब अकाउंटेबिलिटी, सब कुछ उनको पहले से क्लियर कर दिया जाता है, और उसके बेसिस पे उनको क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, उनकी सैलरी के बाद किस तरह का रिवॉर्ड सिस्टम होगा, किस तरह का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा, उनको पहले से बताया जाता है. why it happens, why it is required? Because बाद में उनको बार बार जाके नहीं बताना पड़ेगा आपको ये काम करना है, आपको बस उनके पास पहले से ही क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होंगी. दैट मीन्स यू आर गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल by organizing them in groups, formally organizing them in groups, and also creating an environment wherein people themselves would perform and they would cooperate in order to meet the group goals. Group goals as in, आपके जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपना गोल, एचआर का अपना गोल, मार्केटिंग का अपना गोल, लेकिन वो सारे गोल्स आपके एक जो मेन गोल है, विच इज योर ऑर्गेनाइजेशन का गोल, उसको मीट करने के लिए है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल में बात करें, व्हाट इज द गोल ऑफ एनी हॉस्पिटल? व्हाट कैन बी द गोल ऑफ एन हॉस्पिटल? रितिका? To give the best care to patients. To give the best care to patients. Now, in order to give the best care to patients, which is the goal of an hospital, the different departments which are allocated or which are designed, जैसे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मेन काम होगा कि जितने भी फाइनेंस अप्रूवल्स हैं प्रोवाइड करें, टाइमली फंड्स दें, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट जहां पर हो रही हो वो उन एरियाज को आइडेंटिफाई करें, है ना. तो ये सारे गोल्स किस लिए हो रहे हैं? ताकि बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज मिल सके हमारे पेशेंट्स को, ताकि पेशेंट सेटिस्फाई हो और हमारा ओवरऑल हॉस्पिटल के प्रॉफिट्स, ग्रोथ, मार्केट वैल्यू बढ़े. ठीक है. सेम इज विथ एचआर, सेम इज विथ ट्रांसपोर्ट, सेम इज विथ मार्केटिंग, सेम इज विथ योर नर्सिंग डिपार्टमेंट, राइट. तो एवरीबडी इज ट्राइंग कि डिपार्टमेंट का गोल उस तरह से होगा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मीट कर सके. ठीक है. तो मैनेजमेंट ही अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट अपने आप में एक आर्ट है, इट्स एन आर्ट. ओके, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any question here, guys? No, ma'am. Okay, so next now we'll be studying management style. So when you manage people, when you manage an organization or a department, there are different styles which are to be followed. So we have the first one is, and guys, there won't be any particular best style for any organization. आपके हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सिचुएशन टू सिचुएशन आपके मैनेजमेंट स्टाइल्स भी चेंज होते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट. अब जैसे घर में अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल, सबके जो पेरेंट्स हैं, क्या सभी को सबके पेरेंट्स एक जैसा, मतलब हर सिचुएशन में एक जैसा ही बिहेवियर मिलता है आपको आपके पेरेंट्स से? एक जैसा ट्रीटमेंट मिलता है? Obviously, नहीं, ma'am. नहीं. करेक्ट. तो कभी कभी डांटते भी हैं, कभी प्यार भी करते हैं, कभी समझाते भी हैं, कभी गाइड भी करते हैं. सो बेसिस द सिचुएशन उनका स्टाइल ऑफ मैनेजिंग देयर चिल्ड्रन चेंजेस. Correct. In the same manner, in the organizations also, the kind of style, the kind of leadership that you would find would also be meeting the situational requirements. So there won't be any best style of requirement. जो जनरली पूछते हैं लोग कि मैडम कौन सा लीडरशिप जो है वो बहुत ज्यादा बेस्ट कहलाता है. नहीं, ऐसा नहीं है. सिचुएशन टू सिचुएशन, टाइम टू टाइम, वर्क टू वर्क आपका स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी वेरी करेगा. ठीक है. Okay, now guys, so how we're going to do is, like, one of you would read one, second one of you would read the other one, ऐसे करके हम will explain. So can anyone read the first autocratic leadership for me?
Would anyone initiate, or shall I Yes, take ma'am. the name? Who would like to Yes. read? Sure, ma'am. Okay. I can read, ma'am. Yeah, okay. Autocratic leadership is defined by a top-down approach when it comes to all decision-making, procedure, and policies within an organization. And autocratic leaders focus less on collecting input from team members and tends to make executive decisions that others are expected to follow. Very good. Okay, so when we have autocratic leadership is more of a danda wala approach. Okay, so here what happens? A leader would would not be taking inputs from their lower management or team members or the office staff. Rather, he would just make the decisions about the procedures, policies, and give it to the organization and give it to the people. ओके सो यहाँ पर वो लोग ना पार्टिसिपेशन की जो बात करते हैं हम कि लोगों से उनके फीडबैक्स को लेना या उनके क्रिएटिव थॉट्स को लेना वहां पर इनको इंक्लूड नहीं किया जाता सो जनरली दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज समथिंग you will see in more of strategic decisions or very I would say very close or important decisions for the organization वहां पर वो लोग क्या करते हैं कि बड़ा जहां पर हम we cannot share it with a lot of people so in such a situations in such a scenarios autocratic leadership is followed wherein in terms of decision making procedures policies they would not take the input from their lower management or their even in the groups the people who are working okay now इसके फायदे क्या क्या होंगे जब जैसे कई बार होता है ना घर में भी your father or somebody in your senior people takes a decision in the family वो बिठा के बच्चों से बात करके ना पूछ के कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां पे वो खुद ही इन्वेस्ट कर देते हैं पेरेंट्स अपनी प्लानिंग करके करके भाई इतना इतना पैसा यहाँ है इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारे आने वाले टाइम में फॉर माय किड्स फॉर माय फैमिली ये चीजें हमें जो है यूज करने को मिले तो उसके फायदे नुकसान दोनों हैं फायदे ये है कि क्विक डिसीजंस हो जाते हैं बहुत ज्यादा डिस्कशंस नहीं रहेंगी बहुत ज्यादा क्योस नहीं हो सकता है ना लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि हो सकता है आपको जब भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हो सकता है दे हैव better understanding about the investments and finances since they are न्यू जनरेशन के बच्चे हैं नया कुछ पढ़ा हुआ है तो उनका जो माइंडसेट है उनका जो होराइजन है हो सकता है वो एक नए डायमेंशंस को भी चेंज लेके आए and same is with the organization also when you talk about autocratic leadership it can be effective especially when it comes to decision making they will not be dependent on anyone okay in such cases autocratic leadership has a advantage guys just a moment okay now same is with the disadvantages it would not have a diversity in thoughts like one person is only managing and taking the decisions तो वहां पे किसी तरह का creative thought process वाली कोई बात ही नहीं आएगी है ना then obviously people also would not be engaged into it and teams also would not like to speak anything or would not be interested in giving any opinion
and it would also not have a space for mentorship or professional growth. मीन्स जहाँ पे जो लोग हैं आपस में वो जो प्रोफेशनल ग्रोथ की बात आती है, कोऑर्डिनेशन की बात आती है, कोऑपरेशन की बात आती है, that would also not be available in such in your autocratic leadership style. Okay. Okay, guys. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay, ma'am. Okay. Then next we have a transactional leadership. Who would like to read? Who would like to read this? Transactional. I'm reading it. Okay. Transactional leadership is defined by control, organization, and short-term planning. Leaders who adopt this style rely on a system of rewards, punishment to motivate their followers. As you can see, there are many similarities between transactional leadership and autocratic leadership. The main difference is that transactional leadership, as the name implies, involve a clear exchange between the leader and the team member. For instance, in exchange of complaints and high performance, as employee might be rewarded with a promotion. Yes. Okay. So it is again, somehow or somewhat related to autocratic, but it's not completely autocratic. उसका क्या है कि autocratic leadership में क्या होता है कि फटाफट से decision लेने वाली बात होती है, which is there in the transactional also, wherein you quickly take a control in the organization and do a short-term planning for the work. But here you still have a system of reward and punishment, so that you motivate your followers. वहां पर motivation वाला part आपको नहीं मिलेगा autocratic में, लेकिन transactional में क्योंकि छोटी सी time period या situation के लिए हम लोग वहां पे decision ले रहे हैं, we have brought this kind of leadership because it is a requirement of the organization, or it is a requirement of time. Now in that case, you would also be motivating your people by defining the reward and punishment, reward and recognition system. You define that so and so performance will be getting so and so reward. If you would not perform this, you would get this. So you have a particular defined form of reward and recognition structure, which you may not find in the autocratic leadership. Okay, so here you still have the clear exchange between the leaders and the team members. You will still find a kind of communication जहाँ पर employees को भी पता है कि हमारी management ने बताया है कि इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो हमें ये फायदा होगा, अगर इस तरह से नहीं होगा तो ये नुकसान होगा, जो आपके clear cut instances होते हैं लोगों को motivate करने के लिए, काम के लिए, right? So then, of course, if people are like motivated enough, of course, the chances of high performances would be increased. Okay. So it is good for short-term goals. Then you have very clear, defined expected behavior from the team members, and then you would have a very clear system of reward and punishment, and you would also be providing a very clear and stable structure to the people that so and so person is expected to perform so and so duty, right? वहां पे आपको chaos नहीं मिलेगा, वहां पर आपको complex task नहीं मिलेंगे. I mean not complex task, I would say duplicacy of work नहीं मिलेगा, ठीक है? और पर वहां पे उसके भी disadvantages हैं, क्योंकि it's a more often a quick decisions or a quick statements or quick planning by the management. So यहाँ पर भी लोगों की feedback या लोगों का involvement प्लानिंग के टाइम पर या फिर पॉलिसी बनाने के टाइम पर नहीं किया जाता, तो डेफिनेटली क्रिएटिविटी की स्कोप अपने आप खत्म हो गया. लोग इनिशिएटिव भी नहीं लेंगे उसमें. जब उनको आप पार्टिसिपेट करने के लिए बुला ही नहीं रहे तो लोग क्यों अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे? एंड यहाँ पर क्योंकि हम लोग एक सेल्फ ड्रिवन मोटिवेशन बना रहे हैं कि भाई आपने ये किया तो ये मिलेगा, ये किया तो ये मिलेगा, ठीक है? हो सकता है लोग उस लेवल पे काम करने के लिए मोटिवेटेड ही ना हो, है ना? Since you're not communicating with the people, your people may not like to work. People
पीपल में वांट टू उनको लगता है कि भाई चलो ठीक है, 1 महीने का नोटिस पीरियड, 2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करके छोड़ देंगे ऑर्गेनाइजेशन को. Okay, and when people are not being considered important, they may feel that we don't have the space for the professional growth here, so let's leave the organization. So that ways आपके disadvantages रहते हैं आपके organization में इस type का leadership apply करने में. Clear? Yes, ma'am. Gopi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So Gopikesh, next is bureaucratic leadership, which you would be reading for me. Bureaucratic leadership. Bureaucratic leadership relies on a clear chain of command, strict regulations, and confirmation by its followers. As the name implies, this is a leadership style that commonly found in government entities as well as in military and public organizations. करेक्ट. तो यहाँ ये जो ब्यूरोक्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेटिक तो जिसमें जहाँ पे यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्ट्रिक्टनेस, बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज, छोटी सी माइन्यूट गैप्स भी नहीं हो सकते. इस तरह की जो लीडरशिप होती है ना, वो आपकी हो जाती है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप. एंड दैट यू वुड फाइंड इन, एज मेंशन, आपको गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, या आपको मिलिट्री में, या फिर आपको पब्लिक सर्विसेज, इस तरह के लीडरशिप देखने को मिलेगी. अब इसके फायदे क्या है? फायदे ऑब्वियसली क्योंकि सबके लिए सब चीजें, प्रोसीजर्स बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रिक्ट है, रूल रेगुलेशंस है, तो फेवरेटिज्म के चांसेस हट जाएंगे. स्टेबिलिटी आएगी in terms of job security and outcomes. Like, I mean, people would know that what are the defined way of working. They have to follow that only. Very clear roles, responsibilities and expectations, and very highly visible set of process and regulations. सबको पता है कि भाई ये rules regulations मुझे strictली follow करने ही करने हैं, इसमें कोई escape है ही नहीं. छोटा सा भी escape होगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी punishment खड़ी हो जाएगी. पर इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि हर चीज का ना एक चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी पड़ेगी. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ समबडी वांट्स टू रीच टू अ मैनेजमेंट, उसको पहले मिडिल मैनेजमेंट तक बात करनी पड़ेगी. मिडिल मैनेजमेंट से परमिशन लेके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल पे वो पहुंचेगा टू इवन स्पीक टू समबडी, राइट. उसकी वजह से क्या होता है कि आपके टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स हो जाते हैं. कई बार आप जब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तब तक वक्त निकल जाता है. कई बार आपका इवन मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही चेंज हो जाता है. लाइक आप बात कुछ और पहुंचाना चाहते थे, पहुंच जाती है कुछ और. या कई बार आपको अप्रूवल्स ही नहीं मिलते कि, और अगर आपको चेन ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल, आपको ए को बी से बात करनी है, सॉरी ए को ई से बात करनी है, तो ए हैज टू टेक अप्रूवल फ्रॉम बी, देन सी, देन डी एंड देन ई. Ma'am, I have a question here. Okay, yeah. Like, if I'm working somewhere, अगर मैं कहीं पे काम कर रही हूँ, तो मतलब मेरे अगर बॉस है, सपोज मेरा एक बॉस है, मेरे बॉस का भी बॉस है, तो ऑफ कोर्स मैं मेरे बॉस को छोड़ के मैं उनके बॉस पे नहीं जा सकती ना. मतलब माय पॉइंट इज, मैं जहाँ पे भी काम करूँ वहाँ पे भी मुझे मेरे बॉस से पहले बात करना पड़ेगा, फिर माय बॉस विल टॉक टू हिज बॉस. मतलब वो चीन तो हर जगह होता है ना फिर. Correct. So I tell you, but in some organization, when you have a very small organization, or even in multinationals also, you may for example, you want to reach to your super boss. Okay. You may send a email to a super boss marking a CC to your boss. Okay. Right. Now it will save your time. Obviously, yes. Right. And if your organization is liberal as in it is allowed to speak to your super boss, you can directly speak to him. But in your your organizations like military or very strict public services, where you have a chain of command, you cannot go to the other boss, your super boss, not by informing or getting the approval from your first boss. Then it will be time taking and energy consuming task. Okay, I got it. Correct. Okay. So it is totally dependent on the structure of the organization. What kind of structure you are into. Okay. Okay. Right. And basis what basis the structure, basis the requirement is a kind of leadership that is followed in the organization. Right. So as you asked me a question that, for example, you want to speak to your super boss. Now,
it again depends on what kind of information or what kind of communication you want to have. Like for example, if anything is related to your, for example, your salary, if you the MNC culture, then you would not be even discussing your salary with your boss. You're not supposed to. You can only speak to HR on that, who is only working on the compensation. Ji, ma'am. Yes, ma'am. There are different type of HRs. Somebody is into recruitment, somebody is into payroll. But आपके जो compensation को manage करने वाला जो आपका HR है, आप उसी department के person से ही आप बात करोगे. This is as per the compliance. So you would not be sharing, or you would not be disclosing your salary structure to anybody else. Okay. Correct. So Yes, ma'am. it's a kind of style of leadership which is followed in the management. Okay. Have I answered your question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Fair enough. Now, इसके disadvantages क्या होंगे? हमने advantages की बात करी, disadvantages हमने बात करी कि बहुत strict chain of command रहेगा, लोग obviously encourage नहीं होंगे, creativity और innovation का space खत्म हो जाएगा, free thinking नहीं होगी लोगों की, and अगर आपको कोई change लेके आना है अपनी team में या कहीं, because आपके set rules हैं, compliances हैं, regulations हैं, पहले आप उनको बनाओगे, आप उनको change करोगे, then उसको circulate करोगे, and then it will be incorporated in the organization. But अगर आपका वही सोच के देखो, इस तरह का leadership हो, wherein communication इतना open है that even your supervisor just gives one information and it gets circulated through an email, तो आपका वो change जल्दी से आ जाएगा, है ना? आपका वो change time taking नहीं होगा. Am I correct? Yes, ma'am. Okay, good. So understood this bureaucratic? Yes, ma'am. Okay. Next we have a charismatic leadership. Who will read this? इतना हम सोचने में टाइम लगाएंगे तो हम पढ़ेंगे का? Quickly somebody pick up. Himani? Himani? Himani, would you like to read for us? Ujjwal? Ma'am, I just joined. You just joined. You can see my Yes. screen, right? Yes. Okay, so can you just read these 2 lines? Okay. Charismatic for us. Yeah. These 2. Usually you have to read it loudly for everyone. Okay. In case you're speaking on mute. We can't hear you. Okay, Gopikesh, can you read? Yes, ma'am. Charismatic leadership. Charismatic leadership is defined by a leader who uses their communication skills, perseverance, and charm to influence others. Charismatic leadership gives their ability to connect with people on a deep level, are especially valuable within organizations that are facing a crisis or are struggling to move forward. Okay. So they are the people who have got a good personality, and they are positive enough to influence people to work.
ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं आती। यहाँ पे आपके लीडर्स इस तरह से होते हैं कि दे हैव अ पर्सनालिटी, दे हैव अ करिश्मा इन अ पर्सनालिटी व्हिच मोटिवेट्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल टू डू वर्क। उनमें खुद में इतनी इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है जिससे कि आपके लोग खुद ही मोटिवेट होकर काम करने लग जाते हैं, राइट? And because you know that the positive attitude, the way of transparency, the communication, the people connect that they have will lead to the teams to work on their own, to be to be self driven, so that वहां पर जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, टीम के जो गोल्स हैं, वो मीट हो सके। इसके फायदे क्या रहेंगे? ऑब्वियसली ये इंस्पिरेशनल है, मोटिवेटिंग है, लोग कोलैबोरेट करेंगे, फॉलोअर्स बनेंगे, लोग एक दूसरे को सुनेंगे, आपकी टीम अच्छा काम करेगी, एक पॉजिटिविटी रहेगी टीम में। लेकिन उसके कुछ कुछ नुकसान हो सकते हैं कि इट कैन बिकम मोर फोकस्ड ऑन देमसेल्फ देन देयर पीपल। कई बार क्योंकि लोगों में एक ऐसी इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है जिससे वो अपनी टीम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दैट इज समटाइम इट मे आल्सो बी फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, राइट? वो हो सकता है अपने किसी काम को करवाने के चक्कर में तुम सबको इन्फ्लुएंस करके अपना काम करवाने। So that can also be one of the disadvantage this, and of course it has the potential to become self-serving, frequently viewed as a shallow or disingenuous. So shallow हम जहाँ तक बात करते हैं वो इसलिए भी हो सकता है कि कई बार लोग बिना जाने बिना समझे भी फॉलो करने लग जाते हैं। So like for example, if I'm saying you do this, until unless you know the output of that, आपने बिना बात के ही फटाफट से उसको कर दिया। So people stop using their own brains also when you have the influencing character, influencing personalities, influencing people in your groups or your group leads. So in that situation it can be a disadvantage also. ठीक है? Clear? Yes, ma'am. Okay, next we have a transformational leadership. कौन बोलेगा? Am I? Transformational leadership create a vision based on the identified needs and guide their team towards the undefined goals through inspiration and motivation. The main difference between the transformational leadership and the other styles we have covered so far is that this one is focused on changing the system and the processes that are not working, unlike transformational leadership or bureaucratic leaderships, which do not aim to change the status quo. Status quo. Okay. So we are saying transformational leadership. ये लोग ऐसे होते हैं जो एक they create a vision, they create a thought, they create a mindset, okay, on identified needs, and then they guide their teams to unified goal through inspiration and motivation. Means वहाँ ट्रांसफॉर्म करना है आपने अपनी टीम को। फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम, आपको ऐसी टीम मिली है, दोज हु आर वेरी reprimand kind of people, they don't follow, they don't listen to anyone, they don't perform. Then in that case your leader would define a goal, a vision for your team. They will say कि आपको ऐसा करने से ये फायदा है, इस तरह से करने से आपके काम पर, आपके ऊपर ये इम्पैक्ट, या आप इतने इंपॉर्टेंट हो टीम के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो वहां पर हम अपनी पूरी टीम को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनका थॉट प्रोसेस, उनका वर्किंग, इन सबको जब हम चेंज करते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए इफेक्टिव बनाते हैं, वो हो जाता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, राइट? Here we try to change the system, the processes, the procedures, the people, the team, the mindsets. वहां पर हम बात करेंगे इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल। ऑब्वियसली जब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मोटिवेशन रहेगा, लोगों में अच्छे रिलेशनशिप रहेंगे, टीम मेंबर्स को अपनी ऑटोनॉमी मिल जाएगी कि भाई हमें ये काम करना है, हमें पता है हमें क्या, हमें इस चीज को करना है, क्रिएटिविटी ग्रोथ रहेगी। लेकिन वही डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं जहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ लीडरशिप ऑलरेडी फॉलो हो रहा है, वहां पर आप ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं ला पाओगे। And it can also cause to instability, and there can be lot of pressure also on the leader, जो कि आपके लिए लीड बाय एग्जांपल बन रहा है, या जो एक
ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है टीम को. सो दैट वेज इट कैन बी अ डिसएडवांटेज आल्सो टू द ऑर्गेनाइजेशन और अ टीम. ठीक है, एनी क्वेश्चन हियर गाइस ट्रांसफॉर्मेशनल में? एनी क्वेश्चन? समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So no question so far? देखो दो ही सिचुएशन No, में ना, ma'am. दो ही सिचुएशंस में क्वेश्चन नहीं होता. एक होता है क्लियर और एक होता है ऑल क्लियर. सो क्लियर इज लाइक यू अंडरस्टूड. ऑल क्लियर इज एवरीथिंग इज आउट. सो व्हाट इज द सिचुएशन हियर? Ma'am, I'm understanding. So it's clear or all clear? It's clear, ma'am. Clear. Okay. So Dr. Ujjwal. Yes. Okay. Yes, So ma'am. since so you've just joined, Yes, yes. we are studying the leadership styles of management. Okay, okay. 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 Have you studied management before? नहीं मैम, पहले नहीं किया. नहीं किया. अच्छा. And you are from which place? Belong from Kolkata, but now at working place Tripura. Working place is Tripura. Okay. So working for hospital? Yes, 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 yes. Okay, okay, all right. Okay, okay. And what is the specialty, Dr. Ujjwal? चलिए एक्चुअली NHM RBS के पार्ट में इन्वॉल्व हूँ, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, Okay. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Okay, okay. Okay, fair enough. All right. So Okay. yeah, so Dr. Ujjwal, in case you find anything to ask in between, you may ask, okay? Okay, okay, okay. It No has to be problem. practice section, then only we'll be able to learn. Okay. Okay, so guys, next would be your coaching leadership. Now, who would take a lead? Who will read coaching leadership for me? Ma'am, I'm ready. Okay. Coaching leadership. Coaching leadership is a style defined by collaboration, support, and guidance. Coaching leaders are focused on bringing out the best in their terms by guiding them through goals. Very nice. So it's very simple. Coaching is when you keep on guiding, you keep on supporting, you keep on mentoring your team members, so that so that they would learn, grow, and perform. Okay. Okay. Okay, guys. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it's very simple. जैसे अब मैं आपको like for example आप कोई टास्क कर रहे हो and मैं आपको साथ समझा रही हूँ कि आप इसको ऐसे से करते जाओ और आप उसको फिर वैसे कर रहे हो और आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो you come back to me and I'm helping you out. Okay. But इसके फायदे रहेंगे, टू वे रहता है ना. काफी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रहेगा, जैसे मैं आपको बताती रहूंगी बार बार. देन पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स होंगे, इंडिविजुअल्स के सपोर्ट बनेगा, आपस में एक अच्छे रिलेशनशिप्स रहेंगे, एंड ग्रोथ एंड क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बहुत ज्यादा आपको स्कोप मिलता है. लेकिन इफ यू टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस, देन ऑफ course it's a lot of time consuming and energy consuming job, right? Because you ask me a lot of questions, I am also telling you a lot of time, then you are doing it too, then you again coming back to me, again I'm telling you. So it will lead to a lot of time consuming and energy consuming task. And उसकी वजह से कभी कभी ना आपको एकदम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट्स वो आपको मिलते भी नहीं है. You may not be getting the fastest and efficient results also from this sort of leadership, and it may not be very fruitful and ideal choice wherein you have very huge pressure or time pressure, or you have a very strict result driven requirement. वहां पर आपको इस तरह का जो लीडरशिप है वो आपको कोचिंग लीडरशिप आपका काम नहीं करता. ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is democratic. हाँ जी, फटाफट से somebody.
Maria, Ma'am. read this. Okay. Democratic leadership, which is also commonly known as participative leadership, is about letting multiple people participate in the decision-making process. This type of leadership can be seen in a wide range of contexts, from business of school and school or to government. Yeah. So it is bit of a liberal leadership wherein you have the participation from people, okay, and letting multiple people participate in a decision making process. So that is a sort of democratic wherein you involve people, you take their feedback, opinions, you create a lot of creativity sessions, and then whatever input you get it from majority, आप उसको फिर आप follow करवा लेते हो. लेकिन इसके हमारे पास disadvantages भी रहेगी. Just a moment, guys. Okay, so this is also lead to the advantage, and the disadvantage would be that minority of opinion may not be taken, क्योंकि यहाँ पे सबका जो major decisions रहेगा वही हम लोग मानेंगे, correct? And also this kind of decision making or this kind of output would be a very longer time taking, because यहाँ पे we are trying to convince and make happy and bring majority of opinions. तो वहां पर आपको जो है ये इसका नुकसान भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव अ कोलैबोरेटिव लीडरशिप. कोलैबोरेटिव लीडरशिप वो होती है जहां पर अगेन हम लोग फोकस करेंगे एंड एनकरेजिंग पीपल टू वर्क टुगेदर एज अ टीम अक्रॉस फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज. मींस अलग अलग डिपार्टमेंट से भी लोगों को बुला के उनके साथ गोल शेयर करके उनके ओपिनियंस को लेंगे, उनके ओपिनियंस को आपस में मैच करवाएंगे, ट्रस्ट क्रिएट करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, क्रिएटिविटी लेके आएंगे. बट इसका नुकसान ये भी हो सकता है, सिंस यू आर कोऑर्डिनेटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इट कैन आल्सो लीड टू एम्बिग्युइटी इन रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क, conflicts between different teams. Then sometimes even leaders would also struggle to make everyone together and then bring the collectiveness in the team. So वहां पर ये इस तरह की जो लीडरशिप है वो नुकसान कर जाती है. उसके बाद आ जाता है मेरा जो लेस स्क्वायर लीडरशिप बोलते हैं जिसको. इसमें क्या होता है, your coach would give the liberty to the team members, saying that okay कि ठीक है आपका ये पर्टिकुलर काम है, आप इसको कैसे करना चाहते हो, किस तरह के प्रोसीजर्स फॉलो करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है. सो इट इज गिविंग कंप्लीट हैंड टू द टीम मेंबर्स. अब वहां पर इतनी छूट देने के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं. जैसे फायदा क्या रहेगा कि इंडिविजुअल्स जो है वो लीडरशिप स्किल्स को एंड प्रैक्टिस करेंगे, क्रिएटिविटी आएगी, फेलियर के चांसेस कम हो सकते हैं, लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, ट्रस्ट बनेगा. लेकिन डिसएडवांटेज ये भी है कि प्रोडक्टिविटी कम भी आ सकती है, लोगों में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकती हैं. और जहाँ पे अनस्किल्ड लेबर है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लिटरेट लेबर नहीं है, वो लोग इतने सेल्फ ड्रिवन नहीं होते, उनको बहुत ज्यादा गाइडेंस और बात पुश करके ही काम करवाना पड़ता है. सो दैट वेज आपकी वहां पर लेस स्क्वायर लीडरशिप काम नहीं करेगी. ठीक है. Okay, guys. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so Okay, guys, yes. So guys, here we would take a pause for like 7 to 8 minutes bio break, and we'll connect after 7-8 minutes. Okay. Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am.
Okay. Do we have everyone back? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes, yes. Somebody, Gopikesh, raise the hand. Gopikesh, you've raised it for what? मैम जस्ट मैम क्लास रिज्यूम 15 मिनट से ऊपर हो गया ना. अच्छा. Sorry. Actually, I went outside for a moment. Anyways, okay. Acha. So we are done with this, and then okay. Then we have a level of management. Like, so there are 3 levels of management that you would always see in the organization. One is lower level, one is middle level, and one is senior level. So in lower level management, which is very simple, you will have team leaders, foremen, section leads, supervisors. Okay. But if you talk about the middle level, the heads, department heads, HODs, your regional manager, your department manager, all these people would come under your middle level category. And when we talk about the senior management, here you have chief executive officers, president, vice president, board members. So such top cadre would come under senior management. So they are more working. So they are more working on the policies, procedures, decision making, top decision making. So such management would come under senior management. Okay. Okay, then we have a tips for being a good manager. Now, when you run an organization, be it a hospital, be it finance, be it your manufacturing department, or any sort of services you would have in your organization, your manager would need to have some of the qualities which is going to impact the health of the organization, which is going to impact the overall organization goals management, right? So these are some 3-4 important tips which one has to understand and imbibe in order to be a good manager. Apart from that, we would also be going through these few more which I will be telling you after the functions of management. So what are the important tips you should have in order to be a good manager? First is communicative. It is very, very important to communicate with your teams so that you can understand their needs, their expectations, their progress, their performances, and accordingly you should be in a position to tell them that you are doing so and so, which is going to impact your career. आपकी परफॉर्मेंस में हमें इस तरह के गैप्स मिल रहे हैं या आपकी परफॉर्मेंस अभी इस तरह से अच्छी आ रही है, तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन है that has to be done by the good manager. Okay, then a good manager also has to be very positive as in while speaking to their team members, they have to be positive. The interaction has to be good, comfortable, and very cohesive sort of behavior, so that आपके जो team members हैं वो आपके साथ एक connect रखें and they would be in a position to speak to you, to provide them their provide you the issues, opinions, views, everything. Okay. Then we have train when needed. So to assess the skills of your team and see if you could improve any areas with training. Training also helps your team learn new skills and fosters growth. So you will be assessing the skills of your team and see whether they can improve through trainings, they can improve through the so they would improve through training, they would improve through learning the new skills, right, which you can impart to people. Then we have collaborate. So as a manager, you should feel comfortable delegating tasks, but you should also work with team to accomplish common objectives. So when you say collaboration की बात करें तो collaboration with your team will also allow you to see कि आपकी जो टीममेट्स हैं वो एज अ टीम कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं एक दूसरे से, एंड हाउ कम और हाउ their effort would help each other for the overall growth, for the improvement of the team, right? उसमें individual growth भी आएगी, आपकी team growth भी आएगी, and then organization की growth भी आएगी. ठीक है? Then we have practice.
Perhaps the best way to acquire new skills is to practice them in a real life management setting. Gaining on the job experience in these skills will help you to promotion ladder. Do your best to your team, serve as a leader and treat your team fairly. क्या मतलब है यहाँ पे? क्या? What do you suggest? I mean, how practice as a trait to a leader can lead to a better management? Anybody? Ritika? Yes, ma'am. Would you like to speak on this? How a practice as a trait of a good manager would help the organization or a team? In training, we get to know our work. If we get to know our work, then it is helpful. Okay, so yes, and when you acquire new skills, obviously you help in you help your team also to learn the same. Correct? Am I correct, guys? Are we aligned? Maria? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Drishti Mangana? Yes, ma'am. You can call me Drishti, ma'am. It's quite difficult to pronounce Drishti, ma'am. Right. See, because here in Delhi you have very short names. Yeah, ma'am. You can call me Drishti. Drishti, yeah. Okay. Yes, okay. ma'am. Yeah, good. Although your name is good, beautiful name, sounds very good. Thank you, ma'am. Very difficult to learn that. Okay. Anyways, then moving on to the last very important topic, which is the functions of management. Okay. Now I here will do an activity, but before that I will explain you a scenario, and then basis that you can plan out an activity, and then one by one everybody would talk about it. Because see why I'm saying, because the functions of management is going to be applied everywhere. Okay, and you will also have a question from here also. This is very 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 important topic, the most important topic I would say. यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है? Okay, guys? Yes, ma'am. All right. Any question? किसी को पूछना है कुछ? Not yet, ma'am. Or not yet. Okay. Now we have functions of management. So functions of management here, हमने सबने बात करी that management is getting work done by others, motivating them, creating an environment wherein people work, right? एंड क्यों काम करते हैं हम लोग? अपना एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल मीट करने के लिए. करेक्ट? Yes, ma'am. Okay. Now when we say functions of management here, so management के functions अगर हम बात करें तो 5 important defined functions हैं, which are the most important base for any organization is planning, organizing, staffing, directing, and control. So planning is you plan something, you decide a future course of action, that what you're going to do, how you're going to do, when you're going to do, right, in order to meet your desired goals. हम काम कैसे करेंगे या करवाएंगे, कितना काम होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब हमारा प्लानिंग के अंदर आ जाएगा. ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो जब हमने काम के बारे में डिसाइड कर लिया, we have decided like what work we are going to do, how, when, where, then we will working on the structure of the organization. Means कौन कौन से लोग होंगे, उनकी क्या सैलरीज होगी, वो कैसे काम करेंगे, कितना काम करेंगे, और कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी क्या जॉब अकाउंटेबिलिटी होगी, right? So the difference between responsibility and accountability is that for example, you are responsible to help somebody, but you are not accountable. पर अगर आपका कोई जूनियर है और उसको कुछ क्वेरीज है, तो you are accountable also to answer the query of your junior, because you are kept as a team leader for him. ठीक है? Clear है? Accountability और responsibility का difference. Now so you create such thing in the structure. Staffing में क्या है? आप लोगों को अपॉइंट करते हो. ठीक है? आप लोगों को अपॉइंट करते हो basis the skill set that you have defined in the organizing. So आप रिक्रूटमेंट करोगे, सिलेक्शन करोगे, फिर उनको ट्रेनिंग दोगे, फिर उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स करोगे. ये सब आपका आ जाएगा आपके
स्टाफिंग, ठीक है, उनको पेरोल देना, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कराना, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, डिमोशन, सब आपका जो है वो स्टाफिंग के अंदर आ जाएगा। आपने पहले सबसे पहले प्लान किया, फिर आपने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जिसमें आपने ये डिफाइन किया कि कौन कैसा क्या काम करेगा, कितने लोग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक हॉस्पिटल सेटअप करना है तो आपने उसका बजट बनाया, आपने अपनी लोकेशन डिसाइड करी, आपने हॉस्पिटल में क्या क्या रिसोर्सेज होंगे वो आपने प्लानिंग में किया। देन व्हेन यू कम टू ऑर्गेनाइजिंग, आपने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया कि इतने डॉक्टर्स चाहिए होंगे, इतने सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए होगा, इतना नर्स चाहिए होगा, इतनी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगी, ये सब आपने उसमें डिसाइड किया। स्टाफिंग में now you have appointed the doctors, you have appointed the nurses, you have appointed the supporting staff, and you have given them training, you have given them the development areas, you have also given them the promotions, transfers. That is part of staffing. Now once they once they are into the organization, they start working, आप डायरेक्शन देना शुरू करते हो, आप उनको गाइड करते हो, सपोर्ट करते हो, प्रोसीजर्स प्रोवाइड करते हो, पॉलिसीज प्रोवाइड करते हो, जो भी आपकी बनी हुई हैं वो सब आपके अपने स्टाफ्स को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं। देन यू विल आल्सो बी गिविंग द डायरेक्शन दैट दिस टाइप ऑफ चेंज हैज टू बी देयर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके जैसे भी कोविड आया था, कोविड आने के बाद हॉस्पिटल्स ने भी नए नए पॉलिसीज, नॉर्म्स ये सब तैयार किए। तो जब बाहर वो तैयार हो, मतलब जब इस तरह का सिचुएशन आया, तो जब हॉस्पिटल ने वो जो नॉर्म्स पॉलिसीज बनाई तो वो थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन लोगों तक पहुंची, है ना। Then we have a controlling. Now when you start giving direction कि ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, आपके टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बड़े लोग लेके उनको फिर आपको काम को डिफाइन कर रहे हैं या आपके नए नए डायरेक्शन गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ कंट्रोलिंग भी होगी। उसके बाद कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जो आपने प्लान किया था उसके हिसाब से चीजें चल रही है या नहीं चल रही, वो हमारे कंट्रोलिंग में आ जाएगी, वो इवेल्युएट होंगी, राइट, कि ये काम इस हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, क्या उसके कोई जेन्युइन रीजन है, क्या ऐसा है कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोविड में है, हम सोच रहे थे कि एक हॉस्पिटल में 100 पेशेंट्स क्योर हो जाएंगे, लेकिन जब हम करने बैठे तो हमें समझ में आया ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो अगेन यू वुड चेंज योर प्लान, राइट। सो दैट इज व्हाई इफ यू लुक एट दिस सर्कल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, ये जो गोला देख रहे हैं ना, सर्कल देख रहे हैं, और इसके जो एंड पॉइंट्स हैं ये सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। इसका मतलब ये है कि सारे फंक्शंस इंटर रिलेटेड हैं, हर फंक्शन एक दूसरे फंक्शन से जुड़ा हुआ है। प्लानिंग के ऊपर ऑर्गेनाइजिंग डिपेंडेंट है, ऑर्गेनाइजिंग पे स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग से फिर प्लानिंग। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमने प्लान किया था हो सकता है वो रियलिस्टिक नहीं है, maybe that is not up to the mark, we may have to change the plan, but how will you get to know that your plan is not suitable, your plan is not effective? Through controlling only. आप जब कंट्रोलिंग से ही अपने मेजर्स को इवेलुएट करते हो फिर समझ में आता है यार ये गैप है, ये क्यों है गैप, इस गैप को क्या हमारी प्लानिंग में कोई गड़बड़ थी, या हमारे डायरेक्शन में कमी है, या हमारी स्टाफिंग में कमी है, कहाँ कमी है, फिर उस पे काम करने लग जाते हैं। तो दैट मीन्स ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इट कीप्स ऑन वर्किंग, इट विल नेवर एंड, and your management is applicable to every department, every level, everybody. हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी इन्हीं को फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने प्लान किया कि आप कुछ ये अपने नया सब्जेक्ट जो आपने फॉर एग्जांपल आप BHA MHA जो भी है वो करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपने पहले प्लान किया होगा, बजट आपने देखा होगा, देन आपने सोचा होगा मैं उस वाले इंस्टीट्यूट को अप्रोच करूंगा या करूंगी, ठीक है। देन फिर वहां पे जाके आपने फीस पे करी होगी, आपने लिए एक सीट तैयार करी, है ना। उसके बाद आपको डायरेक्शन मिली कि आप कैसे कैसे, मतलब आपको क्लासेस लेनी है, कब एग्जाम्स होने हैं, उस हिसाब से कब कोचिंग होनी है, एंड देन कंट्रोलिंग। फिर आपके एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स में आपके मार्क्स आते हैं जिसमें पता चलता है कि आप फेयरली अच्छा कर रहे हो, कम कर रहे हो, या बहुत अच्छा कर रहे हो, नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। फिर आप अपने प्लानिंग में आ जाते हो कि भाई अच्छा मैंने इतना पढ़ाई सोची थी मगर मेरे एग्जाम्स के हिसाब से मेरे इतने मार्क्स आए, सो आई हैव टू इन्वेस्ट मोर नंबर ऑफ आवर्स इन माय स्टडीज। सो दैट मीन्स एवरीथिंग इज interrelated, it keeps on moving, it will never stop. Okay, clear guys? Yes, ma'am. Any questions? Acha, clear, good. Now I would give you 10 minutes or 15 minutes. Everyone think about an activity or an area where
you think the functions of management are applied or applicable? Now, once you will think about it, just jot down these 5 functions on a piece of paper. Try to, find out the activities which will come under planning, then organizing, then staffing, then directing, and then controlling. So then I would ask you to, explain what activity or what area of work where you think you have applied or you would be applying the functions of management. Okay, but guys, do this activity very very seriously, because यहाँ से ना आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जब एग्जाम आप करने जाओगे तो, क्योंकि ये हमने 5 टॉपिक्स इसके अंदर कवर कर लिए हैं. ठीक है, और इन 5 टॉपिक में से आपके शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज, कुछ ना कुछ आपका निकल के आता है. ठीक है, तो मोटा मोटा आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड प्रैक्टिकली भी जब आप जॉब में जाओगे तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा. And even in your interviews also, when you would be interviewed, for example, if there's any management related question or a scenario or a case study, you would be able to answer it really well through this. Okay guys. Okay, madam. Am I sound? Yes. Okay. Okay, so guys, so take 10-15 minutes, plan out an activity individually in between, and jot down the points where you see the functions of management. Okay, so I'll connect you once we'll be through with this. Okay. Okay, Gitika, Gopikesh. Yes, ma'am. Good. करनी है ये एक्टिविटी सबको सीरियसली. मैं पूछूंगी अभी बीच में से किसी से. And I would now this time be asking a lot of questions. Ma'am, hello. हाँ जी बोलिए. अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये प्लानिंग किसके ऊपर करना पड़ेगा? ये आप अपनी डे लाइफ या अपनी कोई ऑपरेशंस या अपने कोई काम या अपना कोई इवन कोई हॉस्पिटल में आप जो फ्यूचर जॉब करना चाहते हैं उसकी एक्टिविटी से एनीथिंग ऑफ योर. ओके. अच्छा, ओके.
So guys, when you will complete it, just mention done here in the chat box.
Guys, have you done it? Any one of you? Hello, Siddhika, Drishti, any update? Gopikesh? Hello, ma'am. Yeah. Yeah, Drishti. Ma'am, can you repeat the question once again, please? Okay. So my question is like when you have these functions, planning, organizing, staffing, directing, controlling. So you It's like how I will implement this five. yes, 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 Okay, absolutely. In one particular course of action. okay. Ma'am, let's say ki I wanna start a rice plant. Okay. So for that, of course, I will plan for that at first. Drishti, just a moment. Let me just ask other people also. Have they completed that? Because every individual is doing it. So probably Okay, okay. Yeah, ma'am. we Sure, can sure. discuss, Okay, right? okay, okay, ma'am. Sure. Let me take a view from other people also. Okay, okay. Dr. Ujwal, Maria, everyone. Hello, So ma'am. you still doing or done? Hello, ma'am. Yeah. Uh, Maria, tell me. Is for me, I want to do on this screening of the health screening. Okay, so you've done it or you still want to do it? Not yet complete, ma'am. Not yet. Can you give me 5 minutes? Okay. Let's guys, then let's do one thing. Take it as a homework, complete it, okay, and give a complete thought about it. Let's have a detailed analysis also. I mean, it should not be something that just jotting one small action and then you do it. You please do a elaborative analysis of how you're going to follow this, how you're going to follow the interaction, what kind of planning would be there, then how you're going to do the recruitments,
let's have a complete elaborative approach. You can even take the help of Google also in order to, Okay, ma'am. define and understand one particular function, right? And in the next upcoming class, first we will see your view, what you have done, how you have applied, what are the applications that you have for this particular activity which you have thought. Okay, is it a good plan for you all? Yes, ma'am. Yes. Yes, Yes, ma'am. Right? So next class when we'll be meeting, we'll closing this functions of management, and we will also cover these Henry Fayol principles again, which is very, very important. Then I would also give you some insights about planning importance, even importance of other functions also, which is again very. Then we would also be covering delegation of authority, which is also one of the important topic then for you people, even from exam point of view. And we will also be covering something related to training also. So that is our next class agenda that we'll be covering. And then before we move on, we will complete this management function activity. Okay, but make sure guys, you please do it individually. It's very important. Do not miss it. Okay. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right then. Any question guys for me? Hello, ma'am. Yeah. एक्चुअली आज के लिए मैं थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि ओपीडी का रीजन के लिए थोड़ा इमरजेंसी आ गया है। Okay. तो मैम एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने कुछ मिस किए फर्स्ट टाइम, तो ऑब्वियसली अब सेकंड टाइम जिस बारे में बोला वो प्लान मैंने किया। एक्चुअली वन प्लान इंडिविजुअली कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने प्लान किया, बट खाता पे कुछ नहीं लिखा। ठीक है, हेलो। Yeah, tell me. So what is your question here? मैं बोल रहा हूँ मैं मेरा आपकी इंग्लिश थोड़ा बैकग्राउंड से ना प्रॉब्लम है। बहुत नॉइज आ रहा है आपके। आई थिंक रितिका, कैन यू पुट इट ऑन म्यूट? रितिका, यू पुट इट ऑन म्यूट। उज्जवल, अब आप बोलो। रितिका, आप म्यूट पे डालो। हाँ उज्जवल, अब मैं बोल रहा हूँ जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, हम लोग देखते हैं, काम भी कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। आरबीएस के मैं कंसल्टेंट हूँ, स्टेट कंसल्टेंट। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग कुछ इम्प्लीमेंट मैंने किया। स्टेट ने जो प्लान गवर्नमेंट किया उसकी कुछ मेरा प्लान कुछ ऐड किया। जैसे हम लोग 32 डिजीज लेके काम करते हैं यार, ठीक है। बेसिकली डिफेक्टेड बर्थ जो बच्चे पैदा होता है इससे कुछ प्रॉब्लम अराइज होता है, जो 5 साल 10 साल के बाद वो बच्चे मर जाते हैं, उसका कुछ इलाज नहीं होता पहले। तो जब आरबीएस के इम्प्लीमेंट हुआ 2006, तो हम लोग ज्वाइन किया 2015 में। तो उसके रिगार्डिंग मेरा कुछ प्लान 3 to 4 years का एक्सपीरियंस है। तो जो बात जितना केस है हम लोग देखा था, कुछ डॉक्टर को इम्प्लीमेंट किया, आइस डॉक्टर को वो अंगनवाड़ी और स्कूल में जाके स्क्रीनिंग करते हैं। तो इसकी रिगार्डिंग ये गवर्नमेंट का प्लान था पहले की। तो हम लोगों का अभी प्लान है due to my planning as a consultant, state consultant, हम लोग जब वो लोग जाते हैं स्क्रीनिंग के लिए तब उसके साथ एक डेंटिस्ट को भेजा गया। तो पहले डेंटिस्ट नहीं था, ओनली डॉक्टर जाता था, वो स्क्रीन करते थे। बेसिकली कुछ मेडिसिन भी हम लोगों ने उसका साथ भी भेज दिया, वो गाइडलाइन में ही था। तो इसके रिगार्डिंग कुछ प्लानिंग मैंने किया था, तो वो मैं बाद में बताऊंगा मैडम। ठीक है, तो टोटल वो प्लानिंग का नेक्स्ट वीक होगा।
हाँ तो आप एक काम करो ना, आप उसको अपने पास एक पेपर पे या अपने पास एक सॉफ्ट कॉपी माइक्रोसॉफ्ट में डॉक्यूमेंट में डाल दो, सॉफ्ट है ना? कॉपी है मेरे पास। हाँ तो you can share it in the next class and we'll together work, मतलब सबको input करके we'll try to understand that. ठीक है? Okay मैम, okay. All right then guys. Okay, thank you. Thank you guys. Can we Thank you, ma'am. wind up the class now? Oh, sure, I'm sure. Thank you, ma'am. Any question? Any other question? Not as such, ma'am. वो तो Okay. बाकी पढ़ने के बाद पर। ठीक है. So good to close, right? Yes, Yes. Okay. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.